Good afternoon, everyone. A very warm welcome to today's book reading session. So, let us start our session with a short meditation. Sit back comfortably. Relax your body. On your knees, your palm facing upward. Now close your eyes. The significance of closing your eyes is to look inward, because the treasure is within you. This treasure is none other than your soul. Connect with our souls. Focus on your breathing. Check whether your breathing is shallow or deep. We need to check our breathing multiple times a day. Deep. Now take a deep breath in. Inhale. And as you exhale, leave all the worries, tension, tiredness, any negative emotion that you generated throughout the day. Leave it. Let the toxins flow out through your exhalation. Now, take breath of fresh air. Feel the positivity, love, light, and powers surrounding you. Visualize that you are sitting under the canopy of God's light. How blissful it is. This present moment is such a wonderful gift. How precious you are, how lucky you are to have received this wonderful, healthy body. Feel grateful for everything. Remember, I have everything I need. Thank you, thank you. Om Shanti. Slowly, you may now gently open your eyes. Blink your eyes open. And now,
let us move on to our reading session. Share the screen. We are in chapter 6 now. I hope the screen is visible to all. Today, we will start from the thank you gift. Just give me a second. Few technique. In the Bible, Paul recommends that we make known our request with praise and thanksgiving. Some extraordinary results follow the simple method of prayer. The thankful heart is always close to the creative forces of the universe, causing countless blessings to flow toward it by the law of reciprocal relationship based on a cosmic law of action and reaction. तो यहाँ पे लिखा है कि बाइबल में पॉल ने रिकमेंड किया था दैट वी मेक नोन आवर रिक्वेस्ट विथ प्रेज एंड थैंक्सगिविंग। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई हमारी डिजायर होती है, हम कुछ प्रे करते हैं, तो उसको हम पहुंचा कैसे सकते हैं गॉड तक, या उसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं, उसको प्रेज से और थैंक्स गिविंग से कर सकते हैं। और जब हम अपने प्रेयर में प्रेज को, थैंक्स गिविंग को, धन्यवाद, शुक्राना वाली भावना को ऐड करते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं उसके, जो एक थैंकफुल हर्ट होता है। जैसे कोई अगर थैंकफुल होता है तो आप लोगों को सबसे ज्यादा उसमें क्या दिखेगा? सबसे ज्यादा कंटेंटमेंट दिखेगा ना, उसमें संतुष्टि की भावना दिखेगी। वो हर एक चीज में थैंकफुल होगा, थोड़े में भी थैंकफुल होगा। ऐसे कहा जाता है ना कि अ ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। जब भी हम आधी भरी हुई ग्लास को देखते हैं तो कोई तो कहता है कि ये ग्लास तो आधी खाली है, और कोई कहता है कि ये ग्लास आधी भरी हुई है। तो ये लोगों के नजरिए के ऊपर, उनके पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। और जो लोग थैंकफुल होते हैं वो इस यूनिवर्स के क्रिएटिव फोर्सेस के हमेशा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काउंटलेस ब्लेसिंग्स, अनगिनत ब्लेसिंग्स पहुंचती ही रहती है, क्योंकि यूनिवर्स में ऑपरेट करता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पर। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या है? जो भी हम देंगे वही हम पाएंगे, जो कि कॉस्मिक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। जैसा हम एक्ट मतलब कि जो हम करते हैं वही हमारे पास में वापस घूम करके आता है, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो वही चीजें होती है, जो हम देते हैं वही हमारे पास में आती है। So it all starts with us. For instance, a father promises his son a car for graduation. The boy has not yet received the car, but he is very thankful and happy, and is as joyous as though he had actually received the car. He knows his father will fulfill his promise, and he is full of gratitude and joy, even though he has not yet received the car, objectively speaking. He has, however, received it with joy and thankfulness in his mind. जैसे एक एग्जाम्पल दिए, अगर कोई फादर अपनी सन को प्रॉमिस करे कि वो जब ग्रेजुएट हो जाएगा तो उसे कार गिफ्ट में दी जाएगी, तो अभी उसे कार गिफ्ट नहीं मिलेगी है, जब वो पूरा ग्रेजुएट हो जाएगा तब उसे मिलेगी।
लेकिन फिर भी वो अपने माइंड में काफी थैंकफुल है, जॉयफुल है, इस तरह से खुश है जैसे कि उसे मिल चुकी है वो कार। वो थैंकफुल है अपने फादर के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी प्रॉमिस को फुलफिल करेगी। वो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड और जॉय। I shall illustrate how Mr. Brooke applied this technique with excellent results. He said, bills are piling up. I am out of work. I have three children and no money. What shall I do? Regularly, every night and morning. For a period of about 3 weeks, he repeated the words, thank you, Father, for my wealth, in a relaxed, peaceful manner until the feeling or mood of thankfulness dominated his mind. यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया गया है मिस्टर ग्रे पर, जिनके काफी सारे बिल्स हो जाते हैं, उन्हें पे करने होते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, उनके 3 बच्चे रहते हैं और उनके पास में पैसे नहीं होते हैं। तो वो पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये थैंक यू वाली टेक्निक अप्लाई करी थी 3 हफ्तों तक के लिए, और हर रात को और सुबह को रिपीट कर, यू फादर फॉर माई हेल्प। तो यहाँ पे फादर गॉड को कहा जा रहा है कि थैंक यू फादर फॉर माई हेल्प, मेरी हेल्प के लिए थैंक यू। ये जो वर्ड्स थे उन्होंने 3 हफ्ते तक सुबह और रात को रिपीट करे, बहुत ही रिलैक्स्ड और पीसफुल मैनर। ये उन्होंने रिपीट करे। रिपीट करते करते क्या हुआ कि यही फीलिंग उनके माइंड में डोमिनेट करने लगी। He imagined he was addressing the infinite power and intelligence within him, knowing of course that he could not see the creative intelligence or infinite mind. He was seeing with the inner eye of spiritual perception, realizing that his thought image of wealth was the first cause related to the money, position, and food he needed. Bill is untrammeled by antecedent conditions of any kind. By repeating thank you, Father, over and over again, his mind and heart were lifted up to the point of acceptance, and when fear, thoughts of lack, poverty, and distress came into his mind, he would say, thank you, Father, as often as necessary. He knew that as he kept up the thankful attitude, he would recondition his mind to the idea of wealth, which is what happened. तो उन्होंने ये जो वर्ड्स रिपीट करे, उसके बीच बीच में इनको जब भी ऐसे थॉट्स आते थे, जो थॉट्स ऑफ लैक होता है, जब भी हम भी कुछ चाहते हैं ना तो हमारे भी मन में फेयर डाउट्स अराइज होते हैं बीच बीच में। तो इनके माइंड में जब फेयर डाउट्स, थॉट्स ऑफ लैक, ये सब अराइज होते थे, तभी भी ये थैंक यू फॉर रिपीट करते। और ये रिपीट करते करते क्या हो गया, थैंक यू हम कब बोलते हैं, जब हम कुछ रिसीव करते हैं तब हम कहते हैं। तो इनका जो माइंड था, इनकी जो स्थिति थी, वो भी एक्सेप्टेंस वाली स्टेज पे पहुंच जाती है और इनका माइंड रिकंडीशन हो जाता है। The sequel to his prayer is very interesting. After praying in the above mentioned manner, he met a former employer of his street whom he had not seen for 20 years. The man offered him a very lucrative position and advanced him $500 on a temporary loan. Today, Mr. Brooke is vice president of the company for which he works. His recent remark to me was, I shall never forget the wonders of thank you, Friday. It has worked wonders for me. तो उन्होंने जब प्रेयर की थी, इसका जो रिजल्ट आया था ये काफी इंटरेस्टिंग था। जब ये प्रे करते थे तो उन्होंने उनकी मुलाकात उनके फॉर्मर एम्प्लॉयर से होती है, पहले जहाँ पे काम करते हैं उधर से जो एम्प्लॉयर थे उनसे मुलाकात होती है, जिनको इन्होंने 20 साल से वर्क किया था। और उस एम्प्लॉयर ने उन्हें एक बहुत ही अच्छी पोजीशन ऑफर करी और उनको टेम्पररी लोन में $500 भी दे दिए। और अभी मिस्टर ब्रूक जिस कंपनी में काम करता है उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट है, और वो कहते हैं कि जो वर्कर्स है थैंक यू फादर कहने का, उसको वो कभी नहीं भूलेंगे। इस टेक्निक ने उनके लिए बहुत
The affirmative method. The effectiveness of an affirmation is determined largely by your understanding of the truth and the meaning back of the words in plain use, not vain repetition. जब भी हम कोई एफर्मेशन बोलते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस कैसे डिटरमिन होती है? इफेक्टिवनेस मतलब कि वो कितना कारगर होता है, कितना अच्छे से काम करता है, उस एफर्मेशन की इफेक्टिवनेस डिटरमिन होती है जो ट्रुथ है उसको लेकर के, सच्चाई को लेकर हमारी कैसी अंडरस्टैंडिंग है। Therefore, the power of your affirmation lies in the intelligent application of definite and specific positives. For example, a boy adds 3 and 3 and puts down 7 in the blackboard. The teacher affirms with mathematical certainty that 3 and 3 are 6. Therefore, the boy changes his figures accordingly. The teacher's statement did not make 3 and 3 equal to 6 because the letter was already a mathematical truth. The mathematical truth forced the boy to rearrange the figures on the blackboard. It is abnormal to be sick. It is normal to be healthy. Health is the truth of your being. When you affirm health, harmony, and peace for yourself or another, and when you realize these are universal principles of your own being, you will arrange the negative patterns of your subconscious mind based on your faith and understanding of that which you affirm. अच्छा, इस एफर्मेटिव मेथड को समझाने से पहले हम कुछ पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं जो हमने इस बुक रीडिंग क्लब में सबसे पहले बुक ली थी, जो कि बीके शिवानी की बीइंग ब्लर है। तो उसमें हमने देखा था सोल के कुछ पावर्स होते हैं, प्योरिटी, पावर, पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लेसिंग्स एंड विस्डम। ये 7 सोल के पावर्स है, सोल के कोर नेचर है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रुथ हो गए, क्योंकि अंदर से हम सभी बहुत प्योर सोल्स हैं। जैसे अगर कोई एंग्री होगा तब हमें देखकर ही लगेगा कि ये कहाँ से पीसफुल सोल है, पर अंदर से वो भी पीसफुल है। तो एफर्मेटिव मेथड में हमें ये जानना होगा कि जो ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देकर दिखा गया था ना कि अगर कोई बच्चा है वो ब्लैक बोर्ड पे 3+3 7 लिख देता है, तो टीचर कहती है कि 3+3 तो 6 होता है। तो टीचर के कहने की वजह से 3+3 6 नहीं हुए, क्योंकि ये मैथमेटिकल ट्रुथ है कि 3+3 6 है, इसलिए वो है। पर उस टीचर के कहने की वजह से क्या हुआ कि उस बॉय ने जो अपने फिगर्स लिखे थे उसको उसने रीअरेंज करा, सही तरह से किया, तब फिर उसका आंसर 6 आ गया। उसी तरह से अगर हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स रिपीट हो रहे हैं जिनकी वजह से हम अपनी यूनिवर्सल ट्रुथ से दूर जा रहे हैं, अपने यूनिवर्सल नेचर से दूर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें भी अपनी यूनिवर्सल ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग जानना है, अपने आप को पहचानना है। तब फिर हम उन नेगेटिव पैटर्न्स को अरेंज करके उस ट्रुथ पर लेकर आ पाएंगे। There is some urgent work. Okay, the sister is going to leave now. Thank you for joining. The result of the affirmative process of prayer depends on your conforming to the principles of life regardless of appearances. Consider for a moment that there is a principle of mathematics and none of error. There is a principle of truth but none of dishonesty. There is a principle of intelligence but none of ignorance. There is a principle of harmony and none of discord. There is a principle of health but none of disease, and there is a principle of abundance but none of poverty. Affirmative process of prayer. जब हम प्रेयर एफर्मेशन को लेकर के करते हैं तो हमें लाइफ के प्रिंसिपल्स में कंफर्म करना होगा, मतलब कि लाइफ के प्रिंसिपल्स के साथ में चलना होगा, रिगार्डलेस ऑफ अपीयरेंसेस।
जब हम प्रे करते हैं तो हमें सामने वाली सिचुएशन पे जो परिस्थितियां चल रही है लाइफ में, सर्कमस्टांसेस, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हम जब प्रे कर रहे हैं तो हमारे प्रेयर में यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, जैसे कि पीस, हार्मनी है। यहाँ पे मोमेंट है कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक सेटलमेंट ऑफ एरर, एरर कुछ नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, उसी तरह लाइफ में जब प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ है एंड नन ऑफ डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी है भी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस प्रिवेल कर रहा है, इग्नोरेंस नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, एंड नन ऑफ डिस्कॉर्ड, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ है एंड नन ऑफ डिजीज, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हेल्थ है और पावर्टी, कमी नहीं है बल्कि abundance है, भरपूरता है। The affirmative method was chosen by the author for use on his sister, who was to be operated on for the removal of gallstones in a hospital in England. The condition described was based on the diagnosis of hospital tests and the usual X-ray procedures. She asked me to pray for her. We were separated geographically about 6,500 miles, but there is no time or space in the mind principle. Infinite mind or intelligence is present in its entirety at every point simultaneously. I withdrew all thoughts from the contemplation of symptoms and from the corporeal personality altogether. आई अफर्म्ड एज फॉलोज। यहाँ पे ऑथर अपनी सिस्टर का जिनका ऑपरेशन बनवाया था उनके लिए उनके लिए प्रे किया था, और ज्योग्राफिकली वो 6,500 माइल्स दूर थे अपने टाइम से। पर ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज नो टाइम और स्पेस इन द माइंड प्रिंसिपल। माइंड प्रिंसिपल में कोई किसी से दूर नहीं होता है, क्योंकि जो इनफाइनाइट माइंड है, इंटेलिजेंस है, वो प्रेजेंट होती है हर एक पॉइंट में। तो ऑथर ने पहले तो क्या किया, जो भी सिम्टम्स थे उसके पहले पर उसके कंटेम्पलेशन से दूर रखा खुद को। मतलब जो बीमार है उसके जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में वो नहीं सोच रहे थे। और फिर उन्होंने ऐसे किया, दिस प्रेयर इज रिलैक्स्ड एंड poised, balanced, serene, and calm. The healing intelligence of her subconscious mind, which created her body, is now transforming every cell, nerve, tissue, muscle, and bone of her being according to the perfect practice of all elements lodged in her subconscious mind. Silently, quietly, all the topic of past in her subconscious mind by removed and dissolved. The atom of her life. She is now open and receptive to the healing currents which are flowing through her like a river, restoring her to perfect health, harmony, and peace. All distortions and ugly images are now washed away by the infinite ocean of love and peace flowing through her, and it is so. के लिए जब प्रे किया तो इसमें एफर्मेशन ऐसे ही डाले कि उनकी सिस्टर के लिए प्रेयर है, वो काफी रिलैक्स्ड है, पीस है, काम है, सीरीन बैलेंस्ड है वो। और जो हीलिंग इंटेलिजेंस उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रेजेंट है, जिसने उनकी बॉडी को क्रिएट किया है, वो उनके हर एक सेल को, नर्व को, टिश्यू, मसल को, हर एक उनके शरीर के कण कण को वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके परफेक्ट बना रहा है, हेल्दी बना रहा है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, हार्मनी, वही सब उसको फ्लो हो रहा है, और वो रिसेप्टिव भी है उन चीज को, वो रिसीव भी कर रही है। जो उनके माइंड में जो थॉट पैटर्न्स नेगेटिव वाले क्रिएट हुए हैं वो खत्म हो रहे हैं और अच्छे वाले बन रहे हैं, और जो ओशन ऑफ लव और पीस है वो उनके थ्रू हो जाएगा।
I affirmed the above several times a day, and at the end of 2 weeks, my sister had an exam. जो सिम्टम्स हो रहे थे किसी बीमारी के, इसके बाद में उन सिम्टम्स पर ध्यान नहीं देते थे, ट्रे किया और ट्रे करने की 2 हफ्ते बाद जब वापस से एग्जाम का कराया तो उनकी जो बाकी रिजल्ट थी और एक्सपायर रिपोर्ट उनकी निकल रहा उधर कोई डिग्री to affirm is to state that it is so. Affirm करने का मतलब क्या होता है? ये ऐसा ही है जैसे पचास को कह रहे थे ना वैसे affirmation काम है. And as we maintain this attitude of mind is true, regardless of all the different to the contrary. We आपको बताया कि जब हम ऐसी एटीट्यूड ऑफ माइंड तो ट्रू मानते हैं कि देखनी है इज तो जितने भी हमें contrary evidence and negative and negative situations you know face करनी पड़ रही है लेकिन हमें अपनी प्रेयर के आंसर जरूर नहीं करना. Your thought can only answer for anything you deny. We are actually associated with presence of what you do. जब हमारी थॉट होती है थॉट ही हमारी अफेक्ट करती है और अगर हम इन्हें कुछ डिनाई कर रहे हैं कुछ हम गलत मान रहे हैं मना कर रहे हैं तो फिर भी हम उसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो हम उस चीज को अफर्म करते रहते हैं तो बेसिकली to that state of consciousness there is a sense side which you state as true. You want to affirmation repeat उसको जानकर कि हम क्या कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं और फिर हमारा माइंड उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचता है जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सच है. मतलब हम जब कोई एफर्मेशन देख रहे हैं उसे रिपीट करते हैं हमें उसका मीनिंग पता होता है कि हम क्या कह रहे हैं. ऐसी कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है जबकि वो चीज फिर सच हो जाती है लाइफ में. Keep on affirming the truths of life until you get suspicious reaction which satisfies. मतलब कि हमें तब तक affirmation जो हमारी लाइफ के जो वैसे affirmation को तब तक रिपीट करते हैं तब तक हमारे सबकॉन्शियस से हमें वो रिएक्शन आता है जो कि उस एफर्मेशन को सेटिस्फाई करे तो हमारी लाइफ में वो चीज हमें वापस दिखाई देती है. जैसे एक्शन एक रिएक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन है वो है कि हम एफर्म कर रहे हैं और एफर्म करते करते जब हमें पता होता है हम क्या कह रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं तो हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट करता है उसे बिलीव करता है सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और जब सबकॉन्शियस वो बात पहुंच जाती है तो फिर हमारी लाइफ में वो चीज दिखाई देती है तो वो रिएक्शन हो जाती है इस थॉट process. The argumentative method. This method is just what the word implies. It stems from the precision of Dr. Phineas Parkhurst Cumbie of Mr. Cumbie, a pioneer in mental and spiritual health, lived and practiced in Belfast, Maine, about 100 years ago. A book called The Cumbie Manuscripts, published in 1921 by Thomas Y. Crowell Company, New York City, and edited by Horatio Dressel, is available in your library. This book gives newspaper accounts of this man's remarkable results in rare treatment of the sick. Kumbai duplicated many of the healing miracles recorded in the Bible. Indeed, the argumentative method employed according to Kumbai consists of spiritual reasoning where you convince the patient and yourself that his sickness is due to his false beliefs
groundless fears and negative patterns lodged in his subconscious mind. ये जो मेथड है आर्गुमेंटेटिव मेथड, ये प्रोसीजर डॉक्टर पीरियस पार्टस्ट के की बुक से है। उन्होंने वो एक पायनियर्स की मेंटल स्पिरिचुअल हीलिंग में उन्होंने काफी सारे बाइबल से हीलिंग टेक्निक्स को कंबाइन किया है। प्रेयर से इतने सारे मिरेकल्स होते हैं, वो सारी चीजों का रिकॉर्ड है इनके बुक में लिखी हुई है मैन्युस्क्रिप्ट्स में। और इनकी एक मतलब इनके जो हीलिंग्स में एक डिस्कवरी आप समझ सकते हैं कि जो पेशेंट होते हैं उनकी सिकनेस का रीजन उनके ही फॉल्स बिलीफ होता है, जो वो अपने मन में फॉल्स बिलीव रखते हैं। और ग्राउंडलेस फियर्स, कोई जरूरत नहीं फेयर करने की, फिर भी जो मन में फियर्स होते हैं नेगेटिव पैटर्न्स, तो वही सब जब सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता है तब फिर वो बीमार हो जाती है। Your reason is out clearly in your mind and convince your patient that the disease are easily to steal and usual wisdom pattern of thought which has taken time in his body. This strong belief in some external power and external causes has now externalized itself and sickness and can be changed by changing the thought patterns. तो इनके मेथड में क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है उन्हें कन्विंस किया जाता है कि इनकी जो डिजीज है उसका रीजन इनके खुद के डिस्टॉर्टेड ट्विस्टेड जो थॉट पैटर्न्स होते हैं वही फिर उनकी बॉडी में दिखाई देता है। You explain to the sick person that the basis of all healing is a change of will. You also point out that the subconscious mind created the body and its organs. Therefore, it knows how to heal it, can heal it, and is doing so now as you speak. तो यहाँ पे सिक पर्सन को एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो भी हीलिंग होती है उसकी बेसिस सिर्फ एक चेंज ऑफ बिहेवियर है। आपके थॉट पैटर्न में आपको बस एक चेंज होता है क्या नहीं, जिस सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी बॉडी क्रिएट की थी, सारे ऑर्गन्स क्रिएट किए थे, तो वो जानता है कि इसको हील कैसे करना है, उसको हील भी कर सकता है और अभी भी हील कर भी कर सकता है। You argue in the courtroom of your mind that disease is a shadow of the mind based on disease source, Robert Hartman images. You continue to build up all the evidence you can muster on behalf of the healing power within, which created all the organs in the first place and which has a perfect pattern of every cell and tissue within. Then you render a verdict in the courthouse of your mind in favor of yourself or your patient. You liberate the sick one by faith and spiritual understanding. Your mental and spiritual evidence is self-learning. There being but one hand, what we feel is true will be resurrected in the experience of the patient. This procedure is essentially the argumentative method used by Dr. Chimaev from 1849 to 1860. इस मेथड में जैसे कि कहा गया आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड, तो आप सोच सकते हैं कि कोर्टरूम में आर्ग्यू किया जाता है ना दो लॉयर्स के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइंड में आर्ग्यूमेंट चल रही है। तो जिसे लॉयर आर्ग्यू करते हैं, वकालत करते हैं अपने जो क्लाइंट होता है उसके लिए, तो यहाँ पे जो सिक पर्सन है उसके लिए आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि उसकी जो थॉट पैटर्न है उसके वजह से उसके अंदर में ये डिसीज आएगा और फिर उसे कोर्ट में एविडेंस वगैरह होने के बाद में जज फैसला सुनाता है। तो वैसे यहाँ पर भी बाद में माइंड में ये अफर्म किया जाता है कि वो जो पेशेंट है वो फ्री ऑफ दीज एलिमेंट्स, उनको कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई डिजीज नहीं है और वो पूरी तरह से हेल्दी है। तो ये था आर्गुमेंटेटिव मेथड बाय डॉक्टर सुंदर। Today we will keep our session till here. Thank you so much for joining everybody. We will meet tomorrow and start the absolute method is like modern sound wave therapy. Thank you so much for joining.